Hello and welcome to another session of Mahiyatul Amraz. हमने इससे पहले अमराज़ मुरक्कबा की बुनियादी तफसीलात देखी थीं और ये जाना था कि अमराज़ मुरक्कबा की तारीफ़ क्या होती है, अमराज़ मुरक्कबा की मिसालें क्या हैं और किस किस्म के अमराज़ उसमें शामिल हैं। इसके बाद हमने ये भी देखा कि औराम अमराज़ मुरक्कबा की एक क्लासिकल मिसाल हैं और औराम की तक़सीम किस तरीके से होती है उस पर भी बात हुई। आज हम औराम की एक अहम किस्म वारम-ए-हार के बारे में बात करेंगे और इसका जो यूनानी कॉन्सेप्ट है वो देखेंगे। वारम-ए-हार जिसे हॉट स्वेलिंग भी कह सकते हैं इसकी कितनी अक़साम हैं मादे के एतबार से यहाँ बयान की गई है। आप देख सकते हैं कि मादे के एतबार से, दम से और सफ़रा से ये वारम-ए-हार होता है। पहले भी बयान किया गया है कि वारम-ए-हार कैफ़ियत के एतबार से दम और सफ़रा से होता है, जो दोनों ही हार खिलते हैं, दोनों ही गर्म खिलते हैं। इस वजह से दम और सफ़रा यही दो ऐसे मादे हैं जिनसे वारम-ए-हार होता है। ज़ाहिर है कि वर्म है और वर्म में मादे का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, इसलिए वारम-ए-हार की बात जहाँ भी होगी तो वहाँ सूए मिज़ाज सादा नहीं होगा बल्कि सूए मिज़ाज मादी ही होगा और मादा जो उसमें इन्वॉल्व होगा दोनों हार होंगे, चाहे वो दम हो चाहे सफ़रा हो। तो जो मादा दम से होने वाला वरम है, ऐसे औराम को हम फ़लगमूनी कहते हैं। फ़लगमूनी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है मादे दम से होने वाले औराम के लिए। और सफ़रा से होने वाला जो वरम है उसको हम हमरा कहते हैं। तो हमरा से मुराद सुर्ख़ी होती है और सफ़रा में चूँकि सुर्ख़ी की शिद्दत ज़्यादा होती है बनिस्बत दम के, तेज़ी ज़्यादा होती है, इसलिए उसको हमरा कहा गया। यहाँ एक मिसाल देने की कोशिश की गई है और ये समझाने की कोशिश की गई है कि फ़लगमूनी और हमरा किस तरह नज़र आता होगा। तो आप लोगों के समझने के लिए ये मिसाल है। यहाँ देखिए कि फ़लगमूनी का जो वरम है उसमें सुर्ख़ी और तनाव और सूजन किस तरह की नज़र आ रही है। और इसी तरह आप हमरा देखिए, हमरा में जो वरम है यहाँ आप देख सकते हैं ये वरम की कैफ़ियत क्या है। इसमें आप देखिए कि सुर्ख़ी के अंदर जर्दी भी नज़र आ रही है जो कि सफ़रा की ख़ासियत है और अंदाज़ा हो रहा है कि इससे मरीज़ को सोजिश की कैफ़ियत भी होगी। सोजिश जो है वो एक सफ़रा की ख़ासियत है और ऐसे औराम में जलन और शिद्दत, चुभन, इस तरह की कैफ़ियत ज़्यादा होती है बनिस्बत दम के कि उसमें शोख़ सुर्ख़ी जो है ये अलग किस्म की होती है और उसमें तनाव और बोझ का एहसास ज़्यादा होता है बनिस्बत सोजिश के। ये दो औराम ऐसे हैं जो ख़ालिस सफ़रा या ख़ालिस दम से होते हैं। अलबत्ता ये ज़रूरी नहीं है कि ख़ालिस दम से ही कोई वरम हो या ख़ालिस सफ़रा से ही कोई वरम हो, बल्कि ऐसा भी होता है कि दोनों से मिलकर और गैर ख़ालिस मादे से औराम हो जाते हैं। तो गैर ख़ालिस मादे से जब औराम होते हैं तो उनको हम किस तरह से देखते हैं, क्या नाम रखा जाता है, उसकी यहाँ मिसाल है। देखिए, अगर दम गालिब है, प्रीडोमिनेंट दम है और साथ में सफ़रा मिला हुआ है, सफ़रा की आमेदिश कम है, दम ज़्यादा है, तो ऐसे औराम को हम फ़लगमूनी हमरा कहते हैं। फ़लगमूनी जो है ये दम की तरफ इशारा करता है और हमरा सफ़रा की तरफ इशारा करता है।
تو اس میں اصول یہ ہے لکھنے میں کہ اگر فلغمونی پہلے لکھا گیا ہے تو گویا کہ دم غالب ہے اس میں، اور ہمرا بعد میں لکھا ہے، صفرا اس میں کم غالب ہے، کم ہے، تو فلغمونی ہمرا جب بھی کہا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ دم غالب ہے اور صفرا بھی اس میں اس کی آمیزش ہے، اور جب غالب صفرا ہو تو پہلے ہمرا لفظ استعمال ہوگا اور ساتھ میں دم بھی ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ اس میں دم کی بھی آمیزش ہے اگرچہ خلط غالب ہمرا ہے۔ تو اس طرح سے ہم دم اور صفرا میں فرق کرتے ہیں اس کی علامتوں کی بنیاد پر، اور پھر ہم یہ بھی اندازہ کرتے ہیں کہ کبھی کبھی خلط خالص سے، کوئی مادے خالص سے اورام نہیں ہو رہے ہیں بلکہ غیر خالص سے ہو رہے ہیں، اور کسی دو خلطوں کی آمیزش سے ہو رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ہمیں اس کا اندازہ کرنا ہوتا ہے کہ غالب خلط کیا ہے۔ اب اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم اس فرق کو مینٹین کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ جب شناخت یہ ہو جائے گی کہ دم ہے تو اس میں اصول علاج میں وہ چیزیں زیادہ اپنائی جائیں گی جو دم کا استفراغ کرتی ہیں، دم کو بدن سے نکالتی ہیں، اس مادہ مرض کو نکالنے کا جو طریقہ دم کے لیے مستعمل ہے وہ استعمال ہوگا۔ اسی طرح صفرا کی جب آمیزش ہے یا صفرا خالص اس میں شامل ہے تو ہم ایسی دواؤں کا استعمال کرتے ہیں، ایسے اصول اپناتے ہیں جس سے صفرا کو ختم کیا جا سکے اور صفرا کا ازالہ کیا جا سکے۔ اسی طرح غیر خالص میں ہمیں اس بات کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ صرف ایک خلط کا علاج نہیں کرنا ہے بلکہ دونوں کا خیال رکھنا ہے۔ البتہ جو غالب خلط ہے اس کا زیادہ خیال رکھیں کہ وہ زیادہ مادہ انوالو ہے اور وہ زیادہ نکل جائے، اور جو غیر خالص جو کم ہے، جو جس کی آمیزش ہے، اس کی دوائیں اور اس کی تدابیر اسی اعتبار سے کم درجے کی ہوں۔ تو اس طریقے سے یہ پیتھولوجیکل کلاسیفیکیشن ورم حار کی گئی ہے۔ Then another important description is hot swelling or hot worm. So previously we had discussed about concept of amrad murakkaba, what is the definition of amrad murakkaba, and what are the examples of amrad murakkaba, why they are called as amrad murakkaba, and we have seen that in amrad murakkaba, awram is a very classical example of this, and awram are classified according to the matter involved in the waram, in the swelling, as well as we have seen the awram, its classification based on the kaifiyat or quality as waram-i harr and waram-i barid, and according to the matter safrawi, damwi, balgami, sodawi, rihi and mai. So according to the matter there are 6 classes, and according to the kaifiyat there are 2 classes, harr and barid, hot swelling and barid swelling. So it is harr waram. We will see today harr waram. So this is today's our discussion in this slide, waram-i harr. So how waram-i harr are classified? We have seen earlier that the matter, if the matter is dam or safra, then it will be called as waram-i harr. In this slide we will see how dam and safra are responsible in the pathogenesis of waram-i harr and how they are named. So if only dam is involved, only dam is involved in the causation of awram, then the nomenclature is, the name is falgamuni. This is for waram caused by dam. And if the cause of waram is safra,
then such type of awram are called as hamra. We will see by the examples of falgamuni and hura. This will be helpful for understanding the appearance of falgamuni and appearance of hamra and the exact mahiyat of hamra. So you can see here what is the difference between hamra and falgamuni. Obviously it is seen that the color in the hamra and color in the falgamuni are different. It is slightly it is reddish in color. The reddish hue you can see, it is specific for them, and the yellowish sting which is visible here in the waram caused by safra is specific for the color of safra, the nature of safra. Another important thing in falgamuni, the heaviness, the swelling, and the sign and symptoms are related to them, while in safra, burning sensation, the sharpness of pain and breaking sensation is related to the nature of safra. So in this way, falgamuni and hamra can be differentiated by not only symptoms but also by the naked eye examination of the waram. So we have discussed the awram caused by dam and safra, but this is not always the case that any one waram is caused by any one khilt or any one causative matter. There are chances that more than one causative matter may be involved in causation of awram or swellings. So this is a case of awram caused by khilte khalis. It is called as khalis. Khalis means plain. So only one plain khilt is involved, then it will be called as khalis. And then if more than one khilt is involved, then it is classified into mixed causative matter, or it is also called as gair khalis. So if case is the causation is gair khalis, then it will be either dam or safra, mixed causation by dam and safra, because it is a waram-i harr. But whether safra is more in the causation or dam is more in the causation, it is also categorized accordingly. If predominant dam is there, then such type of awram will be called as falgamuni hamra, where falgamuni will be used first because of predominance of dam, and if the predominance is of safra, then it will be before the term will be used hamra falgamuni. So the cause, if the cause is more dam, then the name will start from waram of dam, falgamuni. If the more safra, then the waram will start from the name of the waram will start from hamra, the waram of safra. So in this way the nomenclature can be understood. The point is how and why these classification is required. What is the application of this type of classification? So it is because when we know the causative matter, then accordingly we can use the treatment methods, and we can apply the principles of treatment accordingly to evacuate and to eliminate that particular causative matter from the body. And if there are mixed involvement of two health, then we have to identify which type of health and which type of causative matter is more involved, which is more. Accordingly the methods of treatment will be applicable for more evacuation of that particular health,
and simultaneously if we know that there are symptoms of them and there are symptoms of safra, so while evacuating them we will consider that the cause of safra should be under consideration, and while treatment the treatment should not be so that it can harm the health safra, it may increase the health safra. For example, if we are evacuating health dam and we are using the principle of ilaj bi zid, then dam is hot and wet, while safra is hot and dry. So on the principle of ilaj bi zid, we will cool down the heat. Simultaneously with the cooling down, we will apply some kind of dryness. We can apply some kind of dryness here, while here cooling is associated with wet methods, some methods to decrease the dryness. So this is, although this is cooling down is similar to both the treatment, both the Awram, but both the treatment of both the Awram, but here there are differences. So to avoid such type of treatments which can harm one health and benefit another, we have to consider both, and we have to use a common minimum principle for evacuating both type of health, and this will be explained in detail in the principles of treatment, usul इलाज. इसके बाद वरम हार के ताल्लुक़ से एक अहम कॉन्सेप्ट है वरम हार के दर्जात. देखिए, स्वेलिंग्स जो होती हैं वो मुख्तलिफ़ औक़ात में उनकी कैफ़ियत मुख्तलिफ़ हुआ करती है, और इस बात का अंदाज़ा लगाया गया है ऑब्ज़र्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए कि दर्जात वरम के कैसे होते हैं, कितने टाइम में बढ़ते हैं, कब घटते हैं, और उनका ट्रीटमेंट कब क्या किया जा सकता है. तो इसके बारे में हम देखेंगे कि वरम हार के जो दर्जात होते हैं ये दरअसल 4 होते हैं, 4 दर्जात होते हैं, और उसी एतबार से हम हर दर्जे को पढ़ेंगे, समझेंगे. उनका मुताला करने के बाद हमें अंदाज़ा होगा कि उसका क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है, उसका इलाज में क्या बातों का ख़याल रखना ज़रूरी होता है. तो दर्जा इब्तिदा क्या चीज़ है कि दर्जा इब्तिदा ये है कि मादा जो होता है, जो कॉजेटिव मैटर है, चाहे वो खिल्तो दम हो या खिल्ते सफ़रा हो, वो उज़्व की तरफ आने लगता है, और जब उज़्व की तरफ मादा आता है तो उसका जो हजम है वो बढ़ने लगता है. अब वो इब्तिदा में तो थोड़ा ही बढ़ता है, लेकिन जैसे जैसे बढ़ने लगे वराम, पहले सिर्फ नमूदार हुआ है, दर्जा इब्तिदा में सिर्फ नमूदार हुआ है, सिर्फ एपियर हुआ है. और दूसरा दर्जा जो होता है दर्जा तज़य्युद कहते हैं इसे, तज़य्युद. तो दर्जा तज़य्युद में वरम का हजम, ज़ाहिर है तज़य्युद का मतलब होता है ज़्यादा होना, तो वरम का हजम बढ़ने लगता है. और जो तीसरा दर्जा होता है उसे कहते हैं दर्जा इंतहा. दर्जा इंतहा वो होता है जिसमें वरम का हजम इंतहा को पहुंचकर रुक जाता है, एक लेवल तक पहुंचता है, और वहाँ पहुंचकर जहाँ तक वो मैक्सिमम पहुंच सकता है वहाँ पहुंचकर रुक जाता है. और चौथा दर्जा जो होता है उसका नाम होता है दर्जा इन्हितात. इसमें वरम में कमी आने लगती है और वरम अपने अंजाम को पहुंचता है. यहाँ आप देख सकते हैं कि दर्जा इब्तिदा में और दर्जा इन्हितात तक वरम किस तरह से एक शुरू हुआ, बढ़ता गया, फिर कम होता गया और ख़त्म हो गया. तो ये 4 दर्जे हैं. इन 4 दर्जों की अहमियत इस एतबार से है कि एक तो ये फिनोमेना आप समझिए कि वरम के साथ ख़ास है कि वरम के साथ
ये बात पैदा होगी कि उसका एक न एक दर्जा इंतहा आएगा और एक न एक टाइम वो ख़त्म होगा। ये एक फिज़ियोलॉजिकल या एक मतलब नॉर्मल फिनोमेना कह सकते हैं डिसीज़ का। नॉर्मल मीन्स मतलब ये आम तौर से ये ऑब्ज़र्व किया जाता है। अलबत्ता इसमें इस बात का ख़्याल किया जाता है कि जब वरम पैदा हुआ है तो मरीज़ हमारे पास किस लेवल पर आया है, और उस लेवल पर हमें अंदाज़ा करना पड़ता है कि उस लेवल पर ट्रीटमेंट क्या देना है। तो अगर वरम दर्जा इब्तिदा में मरीज़ लेकर आए तो हमें यह अंदाज़ा करना पड़ता है कि अब इस मरीज़ के उस वरम में अभी मादा उज़्व की तरफ आना शुरू हुआ है। उस वक्त मादे को रोक देना काफ़ी होता है। और दर्जा तज़य्युद में भी मकसद ये होता है कि वरम का मादा बढ़ता जा रहा है, तो किसी तरह से ऐसी दवाएं इस्तेमाल की जाएं कि वरम जो है वो मज़ीद न बढ़े और मादा जो आ रहा है, इंसिबाब पा रहा है, वो वहाँ पर रोक दिया जाए उसे। दर्जा इंतहा में ऑलरेडी मादा वरम कम्प्लीटली वहाँ पर पहुँच चुका होता है। ऐसे मौके पर अब मादा वरम को रोकने वाली दवाओं की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ज़रूरत इस बात की होती है कि मादा वरम को वहाँ से निकाला जाए और तहलील किया जाए। फिर दर्जा इन्हितात में इस बात की और ज़्यादा ज़रूरत होती है कि ऐसी दवाएं दी जाएं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मादे को तहलील कर सकें। तो ये अलग अलग दर्जे में अलग अलग तदाबीर की ज़रूरत होती है, इसलिए हमें आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि वरम किस लेवल का है और कब हमें उसको क्या ट्रीटमेंट देना है। So here we will see what are the phases of waram-i harr. It is called as darajat. Darajat phases are called as darajat of waram-i harr. So what are the phases? Any type of waram-i harr is classified into different phases, and accordingly we see the nature of that particular phase and what is the clinical application of that particular phase. So first phase is called as ibtida or onset. In ibtida, the onset of swelling happens. Causative matter starts collecting in that particular organ. Then next phase is tazayyud. Tazayyud means increasing. So the volume of the waram is increasing gradually, and this is onset. This is a phase of increasing or increment. And in the phase of intiha, the waram stops at its peak volume. All the matter which are started to be collecting from in the awram, and it is continuously increasing here in the phase of the tazayyud. Now in the phase of intiha, it reaches its peak. So this is a phase of intiha. This is a phase of intiha, and here we will call ibtida and tazayyud. Here the phase of intiha is this. And then the last phase is called as phase of inhitat. What is inhitat? This is peak is intiha, and the inhitat where waram convalesces, and the convalescent phase is called as inhitat, where waram reaches its phase, or it is reaching at its fate. It will decrease gradually with the effect of tabiyat. So it is a common phenomena in waram-i harr, and it is just like the age of human being, from the childhood to adolescence, then gradually elderly people are going towards the senile age. So this is a kind of phases of waram-i harr, which is similar to the human ages and different age spectrum of human body. So we have to identify which phase
of waram is this in this patient who is coming to you. So when a patient is coming at the onset, at the stage of ibtida, you can call it either phases or stages. It is better to call it stages, okay, maybe called as phases. In Unani medicine it is called as darajat. Daraja means stage or phase. So if a patient came to us in the phase of onset or ibtida, we have to target the matter should not collect there. The matter which is coming, which has started collecting there, must be stopped. And similarly, in the phase of the tazayyud, we have to aggressively use the drugs which can strongly stop the collection of volume of the matter in that particular waram. While in the case of intiha, and where waram reaches its peak, then we have to we do not need any kind of drugs which can stop the collection of fluid, because it is already stopped. Now we need drugs which can dissolve that particular volume which is collected in that particular waram. And in case of inhitat also, in the last phase, we need the drugs which can dissolve and which can heal that particular waram as early as possible and as strongly as possible. So there are different drugs which are called as the drugs to stop that particular insibab of madda, collection of madda, which is called as rade mawad, and the drugs which can dissolve is called as mahallil awram. So these are discussed in the part of treatment. इसके बाद एक अहम कॉन्सेप्ट है वरम हार का अंजाम, कि वरम हार जो होता है उसके अंजाम के ताल्लुक़ से हम सोचें कि वो कैसे ख़त्म होता है, अच्छा हो जाता है या ख़राब हो जाता है ना, फेट क्या है उसका। तो ये भी ऑलरेडी डिफाइंड है, ये ऑब्ज़र्व किया गया है, उसकी रोशनी में हम यहाँ बात करेंगे कि वरम हार के साथ क्या होता है। यहाँ ये जो इमेजेस लगाई गई हैं ये इन्फ्लेमेशंस की इमेजेस हैं, लेकिन इससे हमें समझने में आसानी होगी। तो 3 अंजाम हो सकते हैं वरम हार के इन जनरल, इसके अलावा भी कुछ केसेस हैं, अलबत्ता 3 जनरल अंजाम पॉसिबल हैं। एक ये है कि वरम हार जो है उसको वो मादा तहलील हो जाए, है ना। जैसे कि हमने अभी इन्हितात की बात की, तो दर्जा इन्हितात में हम कह रहे थे कि मादे को तहलील करने की दवाएं दी जाएंगी, ख़त्म करने की दवाएं दी जाएंगी मादे को। तो तबई तौर पर भी ऐसा होता है कि मादा वरम हार जब दर्जा इन्हितात को पहुंच जाता है तो मादे में कमी आने लगती है और तबीयत ख़ुद ही उसको तहलील करने की कोशिश करती है। तबीयत हमने पढ़ा था कि ये क़ुव्वत मुदब्बिरा बदन है, बदन की तदबीर करती है। तो बदन में जहाँ भी बीमारियाँ होती हैं उन बीमारियों को दूर करने के लिए ख़ुद ही कोशिश करती है, तो तहल्लुल ये ख़ुद ही हो जाता है। तो ये देखिए किस तरह से वो कॉन्सेप्ट्स जो हैं जो पहले डिस्कस किए गए थे ये अप्लाई हो रहे हैं और ये इंटरलिंक्ड हैं। दूसरा फेस जो होता है वो होता है जिसमें तहल्लुल ना हो, बल्कि आप देख रहे हैं कि यहाँ ये जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स थे ये इन्फ्लेमेशंस में पढ़ाए जाते हैं। ये तहल्लुल में तो बिल्कुल गायब हो गए थे, है ना, जो मादा था बिल्कुल तहलील हो गया था। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि ये कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं और इसके साथ कुछ और भी मवाद नज़र आ रहा है आपको। तो ये दरअसल तहल्लुल नहीं है बल्कि ये तक़य्युह है ना। तो क़ीह कहते हैं पीप को, क़ीह कहते हैं पीप को। तो जब और क़ीह से बना है तक़य्युह का मतलब ये होता है कि उसमें मकाम वर्म में पीप पड़ जाए।
ٹھیک ہے. تو مقام ورم میں پیپ پڑ جانا تقیہ کہلاتا ہے. تو مقام ورم میں جب پیپ پڑ جاتی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں تقیہ ہو گیا ہے. یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر ایک کیویٹی لائک اسٹرکچر فارم ہو جاتا ہے, اندر پس جمع ہو جاتی ہے, اس کنڈیشن کو ہم خراج کہتے ہیں, ہے نا, خراج یا ایبسس کہتے ہیں. تو یا پیپ پڑ جائے یا پھر وہ خراج کی شکل اختیار کر لیں. تو یہ اس وقت ہوتی ہے کچھ کیفیت ہوتی ہے طبیعت کمزور پڑ جائے یا مادہ مرض بہت زیادہ موذی ہو اور طبیعت سے لڑ نہ پائے, تو یہ مقام ورم میں پیپ پڑ جاتی ہے اور خراج اس طرح بنتا ہے کہ وہ طبیعت خود بخود اس کو آس پاس کے اسٹرکچرز کو جو ہے کیویٹی لائک اسٹرکچر میں تبدیل کر دیتی ہے تاکہ مادہ مرض جو ہے مزید آگے نہ بڑھے, وہیں پر جمع رہے. تو یہ تقیہ یا خراج یہ ایک دوسرا فیٹ ہے. اور جو تیسرا فیٹ ہے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس طرح دوسری کنڈیشن کی طرح یہاں پر انفلیمیٹری سیلز وغیرہ تو نہیں پائے جا رہے ہیں, لیکن یہاں پر کچھ آپ دیکھیے کہ کچھ فائبرس اسٹرکچرز نظر آ رہے ہیں نا. تو سیلز تو بہت کم ہے لیکن فائبرس اسٹرکچرز بہت زیادہ ہیں. تو یہ جو کنڈیشن ہے اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں تصلب. تصلب کہتے ہیں سختی پیدا ہو جانا, ہے نا. صلابت کہتے ہیں سختی کو اور تصلب اسی سے بنا ہے. تصلب کا مطلب ہوتا ہے سختی پیدا ہو جانا. تو ورم میں سختی پیدا ہو جائے یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہیلنگ اس طرح سے ہو کہ فائبرز جو ہیں وہ وہاں پر زیادہ جمع ہو جائیں اور فائبرز کا ڈپوزیشن ہو جائے. تو فائبرز کیا ہیں؟ جسٹ اسپیس فلنگ مٹیریلز ہوتے ہیں. تو وہ نارمل ٹیشوز نہیں آتے بلکہ ایک طرح سے ہیلنگ ٹیشوز وہاں پر پیدا ہو جاتے ہیں. اور یہ آپ دیکھیے کہ بھی بالکل نارمل ہے نا, یہ کنڈیشن بالکل نارمل ہے. جبکہ یہ کنڈیشن جو ہے یہ ہیلنگ بائی اسکارنگ کہہ سکتے ہیں. تو یہ انفلیمیشن میں بھی پڑھایا جاتا ہے اور اس کا ایک کوریلیشن یہاں پر ورم ہار کے انجام سے سمجھا جا سکتا ہے. تو اس طریقے سے 3 طرح کے انجام اس کے خاص طور سے ہیں جو ورم ہار کے نتیجے میں پیدا ہو سکتے ہیں. یہ سب سے بہتر ہے اور یہ ایسی چیز ہے کہ اس میں ہمیں علاج کی ضرورت ہے. سیکنڈ والا تقیہ میں علاج کی ضرورت ہے. تصلب میں علاج کی تو ضرورت نہیں ہے لیکن نارمل سے فرق یہ ہوتا ہے اس میں کہ اس میں اب وہ حصہ سخت ہو جاتا ہے, وہاں پر کوئی تکلیف تو نہیں رہتی, لیکن جو پہلے کے ٹیشوز تھے, جو فنکشنل ٹیشوز تھے, فنکشنل آرگنز تھے, اب اتنا حصہ جو ہے وہ کام نہیں کر پاتا ہے جو نارمل ٹیشو کرتے ہیں, اسکار فارم ہو جاتا ہے. Now the fate of ورم ہار. ورم ہار ہونے کے بعد اس کا انجام آفٹر ڈیولپمنٹ آف ورم ہار what will be the fate? It will recover? Will it recover completely or will it worsen? The condition will be worsened or what may happen? So there are 3 types of fate of waram har in general. So what are those? The first one is you can see and you can predict. Here if you have any information about inflammation, then you can understand these are certain inflammatory cells, and you can see these are the blood vessels are dilated, and an inflammatory condition is visible here. So in this type of waram har is actually a kind of inflammation, acute inflammation. So after inflammation subsides, the one fate of this subsidence of waram har or acute inflammation is complete resolution, or it is called as tahallul. We use muhallil damaएं, muhallil drugs for resolution of waram har if required in darja intiha and inhitat, and the complete resolution is called as tahallul, where tahleel happens. Tahleel means
the phase of resolution, the steps of resolution, and the completion of resolution is called as tahallul. So this is first kind of fate which is very positive, and it is targeted so that complete resolution of that varam is achieved and it is desirable, and we must aim to resolve the waram har completely if the patient came to us. Then another fate of waram har in which resolution do not occur, but you can see here the inflammatory cells are increased, many inflammatory cells are there, and you can see the situation of blood vessels, and you can see some other non-desirable structures, and the situation is worsened. So such kind of fate is called as suppuration, where pus formation happens, and many times the abscess is formed. Abscess is just a cavity of pus lined by epithelial tissue. It is because tabiyat we have seen earlier. Tabiyat is a concept of a basic concept of Unani medicine. Tabiyat is a power, innate power gifted to everyone, which functions to fight the disease, to heal the body from any kind of disease. So in this case tabiyat has done its job well, but in this case tabiyat is weak, but and causative matter is stronger, so tabiyat could not resolve it. So in this case tabiyat tries to stop that particular pus formation to be extended into other bodies, so it lines with the certain epithelial cavity. So such cavity is called as abscess. So in this case we need some treatments. Patient if happens with suppuration, abscess formation, then the treatment is required. Another fate is, you can see the structure is different, where only slight inflammatory cells are there. The structure is somewhat resemble with resolution, but you can see the fibrous structures. So these fibrous structures are nothing but the healing tissues. So these healing tissues fill the gaps, and the normal tissue could not be recovered completely, but the gaps in the waram is filled by the healing tissues, which are just used for filling the gaps in between the tissues. They are not functional tissues. So in this case this condition is called as induration. This is the resolution of tahallul, and this one is suppuration, or it is also called as taqayyuh or pus formation. While this third condition is called as induration, or it is also called as tasallub. Tasallub means hardness. Induration is also meant for the hardness. So this is third kind of fate of the waram-i harr. So hope this is clear to you people, what may be the fate of waram-i harr, and what may be the what may be the possibilities. So in this case this is normal and it is good, and in here it is not as good as resolution, but it is not harmful for the body, but not much harmful for the body. It is not only non-functional tissue. Here in the case of suppuration, it is harmful for the body, and it must be treated in a way that is so that we can
drain the abscess, and the patient can get rid of this painful situation.